Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Sheikh Umar Sultan. So in today's video, I'm gonna give you guys my apartment tour. तो अभी मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे निकला था, तो बाहर से आप लोग को दिखा देता हूँ जो ये सोसाइटी है। तो यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो ये वाला अपार्टमेंट मेरा है, उस साइड तो इस साइड से भी गेट है। तो मेरा जो गेट है वो उस साइड से पास पड़ता है। तो मेरा जो बालकनी से व्यू है आप लोग को ये दिखेगा। सो अंदर चल के मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा रूम दिखाऊंगा, और जो भी स्विमिंग पूल वगैरह है, जिम वगैरह है, वो कॉमन है, तो वो भी दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द स्ट्रीट विच गो स्ट्रेट टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल एंड ऑल्सो टूवर्ड्स माई अपार्टमेंट। तो चलिए मैं अभी आपको रूम के अंदर मिलता हूँ। तो ये आई थिंक एक लाउंज है, यहाँ पे अपन बैठ सकते हैं। टीवी वगैरह सब है, सिटिंग कैपेसिटी गुड। Did you even saw what's written here? Being aware of alligator run. बेसिकली ये है, समर्स में एंजॉय करेंगे। अभी तो घंटा इतना ठंड में जाने का आया भी नहीं। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never. Hi guys, so ये अपना जिम है, ये मेरे अपार्टमेंट के ठीक सामने, वो देख रहे हैं, वो मेरा अपार्टमेंट है 4th फ्लोर पे, एंड ठीक उसके सामने दिस इज़ माई जिम। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो पिछले 6-7 महीने से जिम ऑफ है, फिजिक थोड़ा ख़राब हो गया, बट विल बी गेट बैक इन शेप वेरी सून। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own. So now I'm gonna show you guys our community room. So this is the place. यहाँ पे we have some sitting arrangements जहाँ पे अपार्टमेंट के सब लोग आते हैं, बैठ के चिल करते हैं। We have a TV as well, and this is where we have a coffee machine. यूजुअली मैं काम से वापस आके यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ। वी हैव एवरीथिंग ओवर हियर, जितने भी होते हैं, कैपुचिनो, कैफे मोका, एवरीथिंग इज 24/7 अवेलेबल हमेशा रहता है। एंड यहाँ पे वी हैव अ गेमिंग सेटअप, वेरी फेमस बैटमैन। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग वो 90s में वो कैसेट वाला जो गेम आता था वीडियो गेम में, उसमें खेलते थे, तो उसका एक ये फिजिकल वर्जन है। तो खेल सकते कभी टाइम पास के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट विल मूव ऑन टू द अदर साइड। यहाँ पे भी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है, काउचेस वगैरह है, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे सब लोग एक साथ आके गैदर करके हम लोग चिल करते हैं। मतलब पास में रेस्ट रूम है और उसके ठीक पास में जिम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो आई विल स्टार्ट विद द किचन। ये हमारा किचन है, थोड़ा सा अभी मेसी है बिकॉज आई जस्ट कुक माई लंच, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो यहाँ पे वी हैव मोस्टली एवरीथिंग। सो दिस इज द स्टोव वेयर वी कुक, वी हैव सम नाइफ्स ओवर हियर, एंड देन ये सारा कुकिंग वुकिंग का whatever we need, everything is here. Apart from that, the pans and all, everything is inside. We have the oven over here, the dishwasher, and what else? We've got the toaster, juicer, the coffee machine, and we have the refrigerator full of stuff. I've got some fruits, berries, and etc etc. और जो भी सारे प्लेट ग्लास है इधर सब कुछ है, so I didn't have to bring anything. The apartment was fully furnished, so I got everything. So now I'm gonna show you guys my living room. So this is our living room.
यहाँ पे we have got some couches and we have some chess to play, and this is beautifully decorated. We have got this thing which I really love it. You know, this looks so beautiful, and we got some, you know, यहाँ से गरम हवा आता है और it just, you know, feels amazing. So ये हमारा TV है. यहाँ पे we got these two windows from where we have got a beautiful view, and this is a door to the balcony. I'm going to show you guys the balcony. You're going to love the view from here. And yes, we are. It's freezing outside. It's freezing. So the temperature is somewhere between 8 to 9 degrees, I guess. And yeah, so this is my balcony. I've got a chair where we sit, and यहाँ पे बैठ के मैं सुबह की कॉफ़ी पीता हूँ और ठंडी ठंडी हवा आती है, and it just feels amazing, guys. It feels amazing. व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को. तो ये यहाँ से व्यू है, एंड ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है इसके ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है मेरा जिम. वहाँ पे मैं सुबह सुबह जाके वर्कआउट करता हूँ. एंड ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से आप सीधा जाओ तो अपना स्विमिंग पूल है, एंड वहाँ पे इफ यू गाइस कैन सी दैट इज Hawkins from Stranger Things. Okay. Let's get inside. It's too cold outside. I know it's not snowing or anything. यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, but हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा है. And now I'm going to show you guys my bedroom. So let's get inside. Okay. So welcome to my bedroom, guys. So this is my bed. We have got this beautiful lighting over here, which I brought all the way from Dubai. And I'm sorry, thoda sa messy hai abhi room because I was working on my laptop. And yeah, so यहाँ पे this is my side table, and ये window है. यहाँ से same वही balcony वाला view है. So the balcony is right outside my room, and this is my bed. This is a second bed. यहाँ पे मेरा एक दोस्त आ रहा है इंडिया से. Is coming very soon, and bro, if you're watching this video, let me tell you, ये bed अभी जितना clean and properly इस दिख रहा है ये ऐसा नहीं रहने वाला है. I'm gonna use it, and देखो मैं इतने अच्छे से तो नहीं देने वाला यार. And यहाँ पे we have got some storage to keep our stuff, and फिलहाल अभी के लिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना खाना वाना का सामान रखा हुआ है, जो भी इंडियन मसालाज एंड ऑल जो मैं लेके आया था इंडिया से. तो I know in the kitchen में रखना चाहिए, but there are already a lot of stuffs in the kitchen, and अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, कहाँ पे क्या रखूँ. तो अभी के लिए I've kept it over here. सारा जो भी मैगी वैगी दबा के लेकर आया हूँ सब इधर ही है. जैसा एक्सपीरियंस इन दुबई की कपड़े you know हम खरीद सकते हैं, पर खाना पीने का जो भी सामान है, मसालाज वगैरह, ये सारा ज़रूर भर के लेके आओ. यहाँ ऑब्वियसली मिलता है, but it's gonna be expensive, and I don't know, I feel कि taste थोड़ा सा different होता है. I don't know, it's just my personal opinion. Okay, so now let's move to the restroom, which is the most favorite part of this apartment for me. And okay, so let's get inside. I'm gonna switch on the lights, and there we are. So this is the restroom, guys. Huge. I just love it. I just love it. The lighting setup and the overall ambience of this place is just beautiful. I'm gonna have some crazy mirror selfies over here. So I've kept all the toiletries and everything over here. Inside, बाहर कुछ भी रखना नहीं चाहता because you know I wanna keep this clean. And you know how we boys are, but this time I'm gonna try my best to keep this place you know as clean as possible. And so that's the shower area. यहाँ पे एक बार आप घुस जाओ तो आपको निकलने का मन नहीं करता है. तो हाँ, I spend an hour यहाँ पे नहाते हुए. नहीं, अभी काम के लिए तो थोड़ा करना पड़ेगा. So you know, I just love this place. I just love this place. And right here, restroom के साथ, this is my closet where I keep my clothes. So I'm gonna give a tour of this one as well. So let's switch on the lights. Okay, so this is the closet. यहाँ पे मेरे सारे कपड़े रहते हैं. यहाँ पे मैंने अपने जूते वगैरह, सारा जैकेट वगैरह रखा हुआ है. So अभी तक सारे कपड़े मैंने नहीं निकाले हैं. As you can see, ट्रॉली लगेज अभी मेरा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है. I haven't opened it up
बिकॉज अभी सिर्फ दो दिन या 3 दिन हुआ है मेरे को आते हुए एंड I'm still adapting with it. I'm still trying to figure out कैसे क्या करना है अभी. I just got done with a lot of paperwork and all. So yeah, this was my apartment tour so far, and thank you so much for watching this video. If you like the video, do subscribe to the channel and follow me on Instagram as well. And I'm gonna come up with a lot of more videos which will be entertaining, informative and inspiring as well. So if you want to watch more of this, do subscribe to the channel. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never